Oxidation of aldehydes and ketones. In this video lecture, we'll discuss about the oxidation of aldehydes and ketones. First of all, we see कि जो aldehyde है that can be easily oxidized into carboxylic acid by mild as well as strong oxidizing agents. तो हम कौन से oxidizing agents use कर सकते हैं? We can use strong as well as mild. So what are the strong oxidizing agents are? These are the acidified K2Cr2O7 in presence of H2SO4, alkaline KMnO4, H2CrO4 or dilute HNO3. All these are the strong oxidizing agent. Mostly we are using this acidified K2Cr2O7 in presence of H2SO4 for the oxidation of the aldehydes. And we can also use some mild oxidizing agents. These are Tollens reagent, Fehling solution and Benedict solution. All these three are the weak, or we can say these are the mild oxidizing agent which can reduce which can oxidize the aldehyde into the carboxylic acids. Ketones does not get oxidized with the mild oxidizing agent. They are oxidized with the strong oxidizing agents like acidified K2Cr2. All these strong oxidizing agents are required for the oxidation of this aldehydes. और अगर ketones का oxidation होता है तो they will proceed with the cleavage of this carbon-carbon bond, and they are undergo in drastic condition, and जो भी carboxylic acid बनेगा that contain lesser number of carbon atom than the ketones. So जो कीटोन है उनका जो ऑक्सीडेशन है that is under the drastic condition. They are cannot be oxidized by some mild oxidizing agents like Tollens Fehling solutions. They required some strong oxidizing agents, और उसमें भी जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा they contain the lesser number of carbon atom than the ketone form. So, aldehyde are easily oxidized to carboxylic acid having the same number of carbon atom. For example, if we take this acetaldehyde and we do the oxidation, then it will convert it into the carboxylic acid, and here we are using the acetaldehyde, so it will convert it into acetic acid. We can use any of the oxidizing agent as well as strong as well as mild. So all these are the strong oxidizing agents which convert this aldehyde into the acid form. So here there is no cleavage of bond as compared to the ketones. वहाँ पर cleavage होगा, but यहाँ पर कोई cleavage नहीं होगा. यहाँ you can see in this we have the two carbon atoms. There are two carbon atoms, और product के अंदर भी क्या है? There are two carbon atoms. So there is no lesser number of carbon atoms in the product. यहाँ पर जितने carbon atoms जो reactant में होंगे उतने ही carbon atoms यहाँ पर product के अंदर होंगे. So because there is no cleavage of the any carbon-carbon bond. Tollens reagent, it is a mild oxidizing agent, and this will react only with the aldehyde. What is this? This is the ammoniacal silver nitrate solution that is known as the Tollens reagent. This is the ammoniacal silver nitrate solution, and this is known as the Tollens reagent. And this, suppose this is the aldehyde, और इसमें क्या है? यहाँ पर जो Ag plus है, Ag plus ion that oxidize the aldehyde. This oxidize the aldehyde into the carboxylic acid, as well as itself get reduced, and itself get reduced into the metallic silver. ये यहाँ पर इसका जो oxidation state है that is Ag plus. It oxidizes this acetaldehyde into, or any aldehyde into the carboxylic acid. This is the salt of the carboxylic acid, and itself get reduced into the metallic silver. और जब ये metallic silver क्या होता है? It will deposit on the side of the test tube. वो जो जिस टेस्ट ट्यूब में इसको परफॉर्म कर रहे हैं उसके साइड में लग जाता है, तो this Ag deposit on the side of test tube and look like a mirror. So it is also called silver mirror test. This is a very important reaction to distinguish an aldehyde from the ketones. For example, now if we have this ketone,
we have this ketone is there, and we are using this Tollens reagent, that is the ammonium silver nitrate solution, and then we found there is no mirror formation in the test tube. It means the ketones does not react with this Tollens reagent. क्यों? Because Tollens reagent क्या है? This is the mild oxidizing agent. This is the mild oxidizing agent. It does not oxidize the ketones into any carboxylic acids, whereas it oxidizes the aldehydes into their carboxylic acid or the salt of carboxylic acid. So this is a very important reaction to distinguish an aldehyde from ketone, as ketones are not oxidized by this reagent. Next is Fehling solution test. Again, this is also an important test to distinguish between the aldehyde and ketones. What is this? Fehling solution क्या है? This is the mixture of the copper sulfate solution in a strongly alkaline solution of Russell salt. Russell salt क्या होता है? That is the sodium potassium tartrate. So we are using these two thing, that is Cu2 plus that come out from the copper sulfate solution, and this OH minus ions that is come from the sodium potassium tartrate, that is the strong alkaline solution of Russell salt. And now when we are react this aldehyde with this Fehling solution, तो जब हम इसको Fehling solution से इसका रिएक्शन करते हैं और aldehyde को मिलाते हैं, तो we found in test tube the color of this solution is blue, and if aldehyde is present, this aldehyde react with this and it will converted into this carboxylate ion in acid ion, and this copper that get reduced and it will convert it into Cu2O, and then the color of the test tube in that sample become red. So here there is the precipitation of this in the red color formation. So blue color of this Cu2 plus this copper sulfate solution that is discharged into this red precipitate of Cu2O, that show that there is a presence of aldehyde. It means जो aldehydes हैं, they undergo oxidation with the Fehling solution, and this is known as the Fehling solution test. When we are using this ketone, and again we are using Fehling solution, then there is no change in the color. The color will remain blue. So it means ketones does not react with the Fehling solution also, and there is no reaction. There is no color change. So this reaction is also used to distinguish an aldehyde from ketone, because again the ketones are not oxidized by this reaction. So Tollens reagent as well as the Fehling solution, both are used to distinguish between the aldehyde and ketones. Next is oxidation of the ketones. We can also oxidize the ketones, but we require some strong oxidizing agents, and the ketones proceed with the cleavage of the carbon-carbon bond and only under the drastic condition. And the products are carboxylic acid having the lesser number of carbon atom than the ketones. For example, if we have this ketone and this is the symmetrical ketone, because this is the ketonic group and both side it contains the 2 carbon atoms, so it is the symmetrical ketones. And now if we do the oxidation, then the product will be like this and this, because it undergo the cleavage of the carbon-carbon bonds, So if the cleavage can be taken place from here or from here, the product will be this, because यहाँ पर symmetrical ketone है. अगर cleavage suppose A से होता है, तो this will converted into CH3COOH, यानी acetic acid में convert हो जाएगा. और अगर cleavage यहाँ से होता है, तो again
this part is converted into acetic acid as well, and this form will be the into the propanoic acid. तो यहाँ पर क्लीवेज A से हो या B से हो, इस बॉन्ड से होता है या इस बॉन्ड से होता है, we get these two products in symmetrical ketones. So there is no problem in the symmetrical ketones, and what we have to use the strong oxidizing agents like these. Now if we have unsymmetrical ketone, अगर हमारे पास कोई unsymmetrical ketone present हो, तब यहाँ हमारे को देखना पड़ेगा कि क्लीवेज इस बॉन्ड का होता है या इस बॉन्ड का होता है. तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब कभी भी अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो ऑक्सीडेशन है दैट विल टेक प्लेस ऑफ दैट कार्बन विच कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पर देखें तो इस कार्बोनिल ग्रुप के साइड में एक है CH2 और एक है CH3. तो इन दोनों के पास किसके पास कार्बन हाइड्रोजन कम है, दैट इज CH2. इस वाले के पास हाइड्रोजन कम है. तो जो क्लीवेज होगा दैट विल गो फॉर दिस. जो क्लीवेज होगा वो इस CH2 और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में होगा. सो द प्रोडक्ट विल बी दिस. सो दिस विल कन्वर्टेड इनटू CH3 and this will get oxidized into COOH. This will converted into COOH. So it will, this part will give the acetic acid and this part is also give the acetic acid. This also give the acetic acid. So both will give you the acetic acid in this unsymmetrical ketone in this example. So attack at the adjacent carbon carrying lesser number of hydrogen. तो यहाँ ध्यान में रखना है जब कभी भी अनसिमेट्रिकल कीटोन हमारे पास है और कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, तो हमें वो वाला कार्बन जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे दैट विल बी अटैक एंड क्लीवेज ऑफ दैट बॉन्ड विल टेक प्लेस. नाउ in this case again this is the unsymmetrical ketone. तो भी हमने डिस्कस किया कि अगर जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उसके साइड में हमें देखना है कि जिसके पास हाइड्रोजन कम हो उस पर क्लीवेज होगा. लेकिन ऐसा कोई भी कीटोन जिसके पास अगर सपोज दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये भी CH2 है और यहाँ पर भी CH2. ऐसे वाले केस के अंदर क्या होगा, द प्रोडक्ट आर फॉर्म दीज. तो यहाँ ध्यान में रखना है कि when carbon adjacent to the carbonyl group contains same number of hydrogen atom, अगर यहाँ पर दोनों में same hydrogen atoms हो, then carbonyl group remain linked preferably to the smaller alkyl group. तो यहाँ पर जो ये carbonyl group है वो जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है उसके साथ अटैच होगा. तो इसका मतलब जो क्लीवेज होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम हियर. बिकॉज यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर है हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ हमारे पास है 3 कार्बन एटम्स. तो स्मॉलर पार्ट इज दिस. सो ऐसा कोई भी अनसिमेट्रिकल कीटोन जहाँ पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्योंकि यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्लीवेज कहाँ से होगा. तो क्लीवेज उस कार्बन कार्बन बॉन्ड का होगा जिसके साथ जो कार्बोनिल ग्रुप है वो लिंक्ड रहेगा विद अ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप्स. तो यहाँ पर जो क्लीवेज होगा दैट विल प्रेफर दिस. सो व्हेन दिस इज क्लीवेज है तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 COOH, दैट इज CH3 CH2 COOH. ये बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो इट विल फॉर्म अ CH3 CH2 COOH. इट ऑल्सो गेट द CH3 CH2 COOH. तो यहाँ पर ध्यान में रखना है ये 3 बातों को कि सिमेट्रिकल एल्कीन है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, और एक और कंडीशन है जहां अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर that carbonyl group contain the same number of hydrogen atom at both sides, then the carbonyl group remain linked preferably to the smaller alkyl groups. Next is haloform reaction. haloform reaction कौन कौन दे सकते हैं, सबसे पहले important है that is the methyl ketone. यहाँ methyl ketone can go for haloform reaction. Acetaldehyde also go for haloform reaction, and these secondary alcohols
like this type of alcohols also go for the haloform reaction. First, an important thing that in haloform reaction, methyl ketones and only acetaldehyde. This is very important thing. As only acetaldehyde जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, बाकी सारे मिथाइल कीटोन जिनके पास भी मिथाइल कीटोन है, जो भी मिथाइल कीटोन होंगे यानी कार्बोनिल ग्रुप के पास एक CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, दैट इज नोन एज मिथाइल कीटोन. यहाँ और कुछ भी हो सकता है, but we have to see this part. Means that is methyl ketones. So methyl ketones and only acetaldehyde. This acetaldehyde, when heated with the halogen, it may be a chlorine, bromine or iodine in presence of a strong base, then it gives the haloform reaction. तो वहां पर क्लोरोफॉर्म बन सकता है और या आइडोफॉर्म बन सकता है. And ketone is oxidized to form the sodium salt of the acid containing one carbon less than the ketone. यहाँ पर भी जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पर जो भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा वो एक कार्बन कम बनेगा एज दैट ऑफ कीटोन. एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स ऑफ दिस टाइप कौन से, जिसके पास सेकेंडरी एल्कोहल्स हों और जो जहां पर जो OH ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के ऊपर हो, यानी ये पार्ट हो. दिस पार्ट शुड बी देयर फॉर हैलोफॉर्म रिएक्शन. सो सेकेंडरी अल्कोहल ऑफ दिस टाइप यानी जिसके पास CH3CH OH है, यानी OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन नंबर 2 रेस्पॉन्ड टू दिस रिएक्शन, एंड ओनली द इथाइल अल्कोहल इज द ओनली प्राइमरी दैट गो फॉर द हैलोफॉर्म रिएक्शन. तो यहाँ केवल इथाइल अल्कोहल है. This is CH3CH2OH, that only this primary alcohol जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है. बाकी सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं. सेकेंडरी अल्कोहल्स में कंडीशन है कि जो OH ग्रुप है that is present on the second carbon atom, तो they will go for the haloform reaction. Now in this haloform reaction, this is again the methyl ketone. We are using this chlorine in presence of a strong base, and heating it will convert it into this salt of acid. And if we are using this chlorine, we get this chloroform. और अगर हम आयोडीन यूज करेंगे तो we get this iodoform. So आइडोफॉर्म को कैसे चेक कर सकते हैं? आइडोफॉर्म इज द पेल येलो प्रेसिपिटेट. वहां टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम इसको एसीटोन को लेते हैं और आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड जब इसको हीट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है. अगर येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे उस टेस्ट ट्यूब जो रिएक्शन है दैट कंटेन दैट दिस particular type of ketones. So we get this yellow precipitate of iodoform here. Now in mechanism, this reaction is a combination of two reactions. First is halogenation of ketone in presence of base, and second one is the cleavage of the trihaloketones by base to give the haloform and the acid ions. Let's see the mechanism of this reaction. First step is this. यहाँ we are using this methyl ketone. This is the methyl ketone in step first, and we are using the NaOH. So if by base we get this OH minus ion, and because now this is the alpha carbon, or these are the alpha hydrogens are present, alpha hydrogen atoms are there, so these are acidic in nature, so they showing the acidic character here. When these are acidic, they will react with this base, and so OH will take away one of the hydrogen from this, and we get this carbon ion, and we get the H2O molecule. In second step, this halogen, that is suppose if we have this X, it may be chlorine or bromine or iodine, so it will break like this. So one of this is minus, and that another one will be the positive. That positive will react with the CH2, so it will form the bond with the CH2. In third step, the step number 1 and 2,
they will again going same for 2 times. जब ये दोनों रिएक्शन स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड 2 बार और होंगे तो all of the hydrogens that these 2 hydrogens are replaced by the halogen atom. वहाँ जितने भी हाइड्रोजन्स हैं अल्फा कार्बन के ऊपर वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे एंड वी गेट द स्टेप ऑफ स्ट्रक्चर. देन from the base again we get this OH minus ions, and so because this carbon is now electron deficient because यहाँ पर भी 3 halogens हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को कम कर रहे हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस कार्बन के ऊपर से कम कर रहे हैं. So that OH minus ions from the base will attack over this carbon to form this structure, and after then the electron shifting of the electrons will take place like this. So it is then it will remove the CH3. Then the electrons are shifted over here and this CH3 will remove from here and we will get this acid. We get this acid from this and removal of C minus X3. And it is a very good relieving group, so it is easily released from this from here and we get this acid, and then this acid will lose this H plus sign, this will go to CX3 and this will change into the acid ion. This will convert it into the acid ion and we get the haloform. If we have chlorine, if we use this chlorine, then haloform will be the chloroform. That will be the chloroform. And if we use iodine, then it will be the iodoform. So this is the mechanism of the haloform reaction. Which of the following give haloform test? Now first is this. haloform test क्या ये देगा या नहीं देगा? haloform test के लिए हमारे को क्या important बात रखनी है? That it should be a methyl ketone, but it is a ethyl ketone. Both are the ethyl group, so it does not give the haloform test. Example second. This is the acetaldehyde, and only acetaldehyde will go for the haloform test because it contains this CH3 group. तो यहाँ पर ये CH3 group है, कार्बोनिल ग्रुप के पास है, तो it will go for haloform test. Now what about this? Again, here it is C6H5. This is acetophenol. Main thing for haloform is that this part. So it is the methyl ketone again. So it will undergo haloform test. And in last example, again we have CH3, C2H5. We required this methyl ketone, so this will go for the haloform test.